Okay, good morning, students. Already we discussed about the Pythagoras theorem. Just we will take a short revision. Pythagoras theorem. For the Pythagoras theorem, there should be a right angle triangle. And its statement is that in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of square of remaining two sides. So there should be a right angle triangle. First condition. There should be a right angle triangle. One angle should be 90 degrees. Suppose this triangle is PQR and everyone's screen is visible, white screen. Yes, sir. Okay. So in triangle PQR, angle Q is 90 degree and opposite side of this 90 degree is known as hypotenuse. And in Pythagoras theorem, statement is in a right angle triangle, the square of hypotenuse square is equal to sum of square of remaining two sides, means first side square plus second side square. So first we have to identify which one is hypo. So here the hypo is PR. Here is hypo. And side 1 square and side 2 square, then take any one as a side 1 and any 2 as a side 2, whatever the remaining side. So one side is remaining, that is PQ, and another side, that one is a QR. So you can take PQ square plus QR square, or you can take QR square plus PR square also. So this one is a Pythagoras theorem. And one more thing in Pythagoras theorem. So that one is a converse of Pythagoras theorem. Converse means it's opposite. इसका opposite हो जाएगा वो. क्या होगा? So suppose a triangle is given again, and we don't know कि which one is a right angle triangle. Which one is a right angle? Not given, दिख रहा है लेकिन है नहीं. पता नहीं हम लोग को है या नहीं है. So this one is a A, B and C. And suppose the values are given, इसकी values हमारे पास है, like this one is a 5, this is 4 and this is 3. So for this one, first we have to find the longest side. The longest side कौन सी है? Longest. 5. Yes, longest side, that one is a AC, that one is a 5. So first we have to do the square of longest side, that is a AC square is equal to 5 square, and that become 25. So this is equation number 1. So 1, that is the longest side square, and then what we have to do? We have to add square of another two sides. कौन सी side बची? AB plus BC बची है. Then but हमें उसका square भी करना. So AB, that one is a 3 square. This one is a 4 square. These become 9. These become 16. और अगर देखोगे इसका total भी कितना आ गया? 25. So equation number 1 and 2, right hand side is 25. Therefore, AC square is equal to AB square plus BC square. So again the statement is that the square of one side is equal to sum of square of remaining two side, then that triangle is a right angle triangle. अगर एक साइड का स्क्वायर दूसरे दो साइड के स्क्वायर के सम्स के इक्वल होता है, सो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है. सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is a right angled triangle at, लेकिन कहां पे 90 डिग्री?
So first we have to find which one is the hypo. Longest side कौन सी थी? AC. तो AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B है. तो एंगल B is 90. So therefore ABC is the right angle triangle at angle B. This is a basic part of this chapter, that is Pythagoras theorem. Okay. So we'll start now the next one. Going to share the screen. Okay. I think so. This sum number 11, correct? Sum is visible. This PDF is visible, everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. एक साथ. अरे अर्णव बाबा है क्या? अर्णव दिख नहीं रहा है मेरे को. दिख नहीं रहा है मीन्स बात भी नहीं कर रहा हो. सो गया लगता है. Just a minute. Huh? This is the question, correct? And I will solve here only. So in triangle, it is given that from the given figure, find the area of trapezium ABCD. ABCD का एरिया निकालना है. कहाँ पे दिख रहा है ABCD? See this one. This part. This one. This part. This part and this part. इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. ओके. विल टेक द वाइट स्क्रीन ओनली. थोड़ा इजी पड़ेगा मुझे भी समझाना एंड डिफिकल्टीज नहीं होगी. विल ओके. सो स्टूडेंट्स मस्त बहुत इंटरेस्टिंग सम है. So I'm changing the page. Now I think so white screen is visible. Now? Yes, sir. So 1A, this one is a B, this is C, this part is D. One more part, that is a triangle. This is the triangle, correct? And your arrow marks are given. This one and this one. Arrow marks are given. Wait. Let me check from my cell phone. So this upper part, that one is upper, this vertex is A. This one is of B. This is of C. This is D. And this one, if you observe in diagram, that one is a dotted line. So that one is a black. मैंने उसको black करके रखा है and this part is blue. Values are given. This is of 5 centimeter. This one is of 5 centimeter. This is of 4 centimeter. Only this much part is given and we have to find area of trapezium ABCD. So students, if you observe carefully, यहाँ पे 3 diagram है. One is this rectangle, that is ABCE. Okay. Another एक triangle भी है इसके अंदर. This is AED. This is A, E and D. और ये ट्रायंगल और ये पार्ट को अगर कट करोगे तो दैट बिकम अ ट्रेपेजियम. दिस पार्ट
this part, and this part. So this is your trapezium, that is A, B, C and D. हम लोग ने डिसेक्ट किया, इसको मीन्स डिवाइड किया. ओके, अरे अंडरस्टूड. Yes, sir. Okay. So first now we will take this ABCE. First we have to prove it is a rectangle. So just write AB parallel to EC. This one is a given. Arrow marks are given, means that is parallel line. Again, angle E is equal to 90. Angle E is equal to 90 degree also given. This is also given. So if E is 90, then A is also 90. So therefore remaining angle also 90. Angle A is equal to angle B is equal to angle C is also 90. If each and every angle is 90, therefore quadrilateral ABCD is a rectangle. If it is a rectangle, we know the area. और यहाँ पे वैल्यू भी दी है. AB is a 5 centimeter and BC is a 4 centimeter. So we have to find area. पहले हम लोग इसका एरिया निकालते हैं. Area of rectangle ABCD. What is the formula area of rectangle? Length into breadth. This is the formula. So length is AB, breadth is BC. That one is a 5 into 4. 5 4s are 20, and that is always in square, centimeter square. So we have this area of rectangle ABC. अब हमें क्या करना है ना, हमें रेक्टेंगल में से ट्रायंगल को माइनस करना है. इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस पार्ट, आपको ये ट्रेपेजियम मिलेगा. ओके, क्या करना पड़ेगा? पूरे रेक्टेंगल में से दिस होल रेक्टेंगल, सी हाइलाइटर इज देयर, इसमें से अगर हम लोग ये शेडेड वाला पोर्शन माइनस करते एडी का, देन वी विल गेट द ट्रेपेजियम. लेकिन सबसे पहले उसके लिए वो ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा. तो ट्रायंगल के लिए हमारे पास एडी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर. दिस इज अ हाइपोटेनियस. अगेन दिस BC इज अ 4. आप अगर देख रहे हो दिस BC 4 है, तो ए भी क्या होगा? 4 हो जाएगा. क्यों? Opposite sides of rectangle are equal. A is equal to BC is equal to 4 centimeter. Opposite sides. एक मिनट, इतने क्लिक कर लाए सर, वो तो ज्वाइन कर ले. अपोजिट साइड्स ऑफ, टू ज्वाइन कर देते हैं, ऑफ opposite sides of rectangle. Now we have this triangle, दिख रहा है AED, जो अलग कलर में किया था मैंने. दिस इज अ 4 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है रे? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. करेक्ट. सो ए इज अ बेस, ये हमारे पास इधर बेस है. सॉरी, ED इज अ बेस एंड A इज अ हाइट. ओके, A हाइट है और A भी बेस है. दिस A इज अ हाइट and that is a 4. तो बेस की वैल्यू नहीं. अगेन वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम in triangle AED. Angle E is equal to 90 degree. So again, which one is a hypo? E के opposite है AD, तो AD is a hypo. Hypotenuse square is equal to A का square plus ED का square by Pythagoras theorem. So value of AD is a 5 square, A is a 4 square, and ED not given. 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ED not given.
ED square. We have to shift this 16 another side, तो 16 क्या हो जाएगा, प्लस था हो गया माइनस, that is ED का square. 25 minus 16 become 9 ED square, and 9 is the square of 3. ED का भी square है, then we have to take ED is equal to 3 centimeter. Just write taking square roots. So ED become 9. Okay. So again we will draw this triangle. एक triangle मैंने बना दिया फिर से. A, E and D. So area of triangle AED is equal to, formula we have to write formula, it carry marks, base into height. Half into base into height. तो बेस इज ईडी, करेक्ट, और जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है, और जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बना है वो बेस होता है, हाफ. ईडी की वैल्यू अभी फाइंड आउट किया हम लोग ने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, एंड ए हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया, दैट इज 4 सेंटीमीटर. 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा इज 6. So this one is a 6 centimeter square. अब क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया. तो स्टूडेंट्स अगेन सी द ओरिजिनल डायग्राम. ओरिजिनल डायग्राम ऐसे थी. दिस इज ए, बी, सी और डी, सॉरी दैट इज ई. इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट बिकम डी. तो यहाँ पे जो ट्रायंगल हो गया, ओरिजिनल में से अगर दिस पार्ट वी विल कट, ये वाला पार्ट अगर शेडेड वाला कट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, देन वी विल गेट ABCD. तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, फिगर क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज ABCE. उसमें से शेडेड पार्ट क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED. समझ में आ रहा है शिवानी, प्रियल? If understood, just give me a thumb. Then this become 20, this becomes 6, and 20 minus 6, that is a 14 centimeter square. Got the value? समझ में आया? Okay, प्रियल हो गई, शिवानी, अर्णव, वेदांत. वेदांत, you come by 11:30 here, and if you want, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, no problem. This is the Pythagoras theorem, मे भी आपको आगे चैप्टर आएगा ये. ओके अर्णव, चलो, if you want to write, ये लिखना है आपको लोगों को, ये टेक द स्क्रीनशॉट और बाद में लिख लो. टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, 3 2 1 शूट.